Hello everyone, welcome back to my channel Lightly Noor. So this video is going to be about a step-by-step guide on how to write emails. So I'll be sharing my screen and showing you how to write emails on your laptop as well as on your phone. So it doesn't matter whether you are a working professional or not. अगर आप email writing सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो because आजकल email writing is important for everyone whether you are working or not. So I'll be sharing my screen and showing you how to write a very basic email कि अगर आप जिसको भी email कर रहे हो उसका email ID कहाँ पे डालना होता है, अगर आप अपने email पे कोई फाइल या कोई image डालना चाहते हो तो वो कहाँ पे ऐड करना है, everything in detail. So watch this video till the end and do not skip the video and consider subscribing to my channel because I create videos on jobs, corporate life lessons, etc. So probably you can also learn from my experience. But before we get into it, like how to write an email, let's understand why email writing is important. Remember in our school days, we had a thing in our syllabus called letter writing, right? So that letter writing has been replaced now by email writing. Sadly, for the 90s kid, we did not get to work on the things which we have studied in our school and colleges because digital revolution happened during this transition by the time we came out from our schools and colleges. I'm still not sure if the school syllabus has changed from letter writing to email writing now. Jean Z can probably comment and let me know. So all those letter writing which we learn in our school, like write a letter to your local commissioner to get your locality cleaned or get your street light repaired, write a letter to your school principal asking him to add a library period. All those things has now got changed into email writing. So email has become a necessity for all of us, whether we are working or not. Like most of the complaints or grievances are now routed through email. Like any issues if you are facing with IT departments, with any of the government officials, like if you want to update your phone number to your bank, or you want to update your PAN card to your bank account, etc., etc., you need to write an email. Forget about these big things. Even like you're buying something from Amazon or Flipkart and you encountered any issue, so most of the high visibility escalations are routed through emails. So these days email has become a necessity and it has become as relevant as like texting. Hence it's very important that we all should know the basic of writing email. So let's go straight to the topic, and I will be sharing my laptop screen and showing you how to write emails on the laptop, and then I'll move to my phone and show you how to write emails through your phone. So stay tuned on this video and watch this video till the end. So we are on my laptop और ये बेसिक सा गूगल सर्च का विंडो है, और यहाँ पे अगर आप अपनी ईमेल आईडी से लॉग्ड इन हो अपने लैपटॉप पे तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो आइकॉन दिखेगा। तो यहाँ पे जो डॉट्स हैं, यू जस्ट गो टू दिस मेन्यू एंड क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे आपको अपना जीमेल दिखेगा। सो यू क्लिक हियर एंड your screen of your email ID opens. So how to write a new email? So you need to click on this compose button. So let me maximize this. हाँ, सो दिस इज़ द पेज वेयर यू नीड टू कंपोज योर ईमेल, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल लिखना है। सो टू मीन्स टू द पर्सन यू आर राइटिंग एन ईमेल, तो आप जिसको भी ईमेल भेजना चाहते हो आप उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक लेट्स सपोज यू आर फेसिंग एनी इश्यूज विद द SBI बैंक एंड यू नीड टू राइट एन ईमेल टू द SBI कस्टमर केयर, तो आप यहाँ पे SBI का कस्टमर केयर का ईमेल आईडी डालो। ये मुझे पता था, ये मैंने डाल दिया। अगर आपको किसी और को भेजना है तो जिसका भी आपको भेजना है आप उसका ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दो। यहाँ पे आप देख सकते हो CC या BCC का ऑप्शन होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। जनरली इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ़ यू आर सेंडिंग दिस टू समवन और आप उसके मैनेजर को डालना चाहते हो तो आप ये CC में डाल सकते हो, या फिर आप अपने खुद के मैनेजर को भी CC में डाल सकते हो। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC में आप जिसको भी डालते हो बाकी लोग नहीं देख पाएंगे आपने किसको किसको BCC में डाल रखा है। देन कम सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो होता है, वट एवर इज देयर ऑन योर ईमेल दैट शुड बी कंप्रेस्ड इनटू अ सब्जेक्ट लाइन। लेट्स सपोज आपका कोई पेमेंट डिडक्ट हुआ है जो कि that transaction is not done by you, so you can just write transaction issue of, let's suppose आपका 5000 का ट्रांजैक्शन हुआ है which is not done by you of 28। so आपका सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आप जो ईमेल में लिखोगे वो आप कंप्रेस करके सब्जेक्ट में डाल दो, ताकि आपका सब्जेक्ट पढ़ के ही लोग समझ जाएं कि आपका ईमेल में क्या लिखा हुआ है। और दिस इज़ द मेन बॉडी। आई नो इन आर लेटर राइटिंग वी यूजुअली यूज टू राइट डियर, बट हेलो इज़ इक्वली फॉर्मल वर्ड टू एड्रेस एनीवन नाउ। तो आप डिटेल्स लिख दो जो भी ट्रांजैक्शन के बारे में आप हाईलाइट करना चाहते हो, एंड देन
हियर इफ़ यू नीड टू अटैच एनी फाइल, या फिर अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है जो आपने लिया हुआ है फ़ोन से, या फिर कोई और फाइल आपको अटैच करना है, तो हियर यहाँ पे आपको दिखेगा अटैच फाइल्स. यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन and you can attach the files from here, from your desktop. If you want to highlight something, अगर आपको इसको highlight करना है तो आप इसको select करके bold कर सकते हो. You can end your email by writing regards and your name. One important thing which you should note over here कि यहाँ पे जो आपको 3 dots दिख रहे हैं, you click over here और यहाँ पे check spelling का option आता है, जो मैं usually ऑन करके रखती हूँ, so that while typing if I make any kind of mistakes it gets auto rectified. So here you need to recheck, like let's suppose I made a mistake on this happened and I click on recheck, so it will show me that here is the spelling mistake and I can change this spelling. So this is the importance of the spelling check, so that you do not send any incorrect spelling or sentences with incorrect grammar to someone, because it doesn't leave a good impression to them. So, and once you completed writing your email, you can just hit on the send button and your email is done. So this is how you write an email on your laptop. So let's go to my phone and I will show you how to write an email on your phone. We are now on phone, और phone का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग होता है. So let me show you how to write an email on your phone. तो आप अपनी Gmail पे जा सकते हो. This is how I go. यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन होता है, यू क्लिक ऑन दिस कंपोज. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ईमेल आईडी आ जाता है, बिकॉज यू आर सेंडिंग द ईमेल फ्रॉम दिस ईमेल आईडी. और यहाँ पे टू में आप जिसको भी ईमेल कर रहे हो आप उसका ईमेल आईडी लिख सकते हो. लाइक आई एम जस्ट राइटिंग xyz@gmail.com. आपके पास ऑफकोर्स आप जिसको भी ईमेल कर रहे हो उसका ईमेल आईडी होगा. एंड देन सब्जेक्ट लाइन, लाइक जैसे मैंने लैपटॉप में बताया सेम आप सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे डाल दो. लेट्स सपोज यू आर राइटिंग एन ईमेल टू फ्लिपकार्ट बिकॉज यू इनकाउंटर्ड एन इशू. आपने कुछ प्रोडक्ट मंगाया और उसमें कोई इश्यूज थे. देन यू नीड टू राइट इश्यूज रिलेटेड टू माई ऑर्डर. और आप यहाँ पे अपना ऑर्डर आईडी डाल सकते हो. अभी के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा. आप कुछ भी ऑर्डर करो फ्लिपकार्ट से कहीं से भी, उसका ऑर्डर आईडी रहता है, आप ऑर्डर आईडी डाल दो. इस सब्जेक्ट लाइन ऐसे इसलिए लिखा जाता है सो दैट यू नो इफ़ यू राइटिंग एन ईमेल टू समवन, वो सब्जेक्ट लाइन पढ़ के समझ जाए कि आपका ईमेल जो है वो किसके रिगार्डिंग है. यहाँ पे हेलो या जो भी आपका कंसर्न है, वॉट एवर इज यू कंसर्न, यू कैन राइट इट ओवर हियर. लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम यू. सो अभी आपने जो देखा जैसे मैं लिख रही थी, यहाँ पे सजेशन आ रहा था, मुझे बस यहाँ पे स्वाइप करना पड़ा, पूरा नहीं टाइप करना पड़ा. सो आई मेड अ वीडियो एक्चुअली कि आप अपने फ़ोन पे ये सेटिंग कैसे कर सकते हो, सो दैट यू राइट करेक्ट स्पेलिंग एंड करेक्ट ग्रामर. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो येट, you can go back. I'll put the link on this I button. You can go back and watch this video. That is really helpful. You see how easy it is for me to type everything over here. I just type reg and it comes suggestions like regards, regarding. So I just need to click on regards and I need to put my name. आप अपना नाम लिख के यहाँ पे email भेज सकते हो. And to send an email, you need to click on this arrow button. And if you need to attach any file, the interface is a little different from laptop. फाइल यहाँ पे अटैच करने के लिए you need to click on this and attach a file. So you can attach a file directly from your internal memory. So for that you need to click on attach file and it will redirect you to your internal memory. Else you can आप अपने ड्राइव से भी फाइल अपलोड कर सकते हो. लाइक you can choose the second option, that insert from the drive. If you click here, it will take you to your drive. So this is how you compose an email on your phone. This is a very basic and simple example on writing email. So I hope this video was useful and you learned something from this video. If yes, please do share with your friends, with your siblings, with your family, so that they also learn something from here. Please consider liking this video and subscribing to my channel if you like my content. Thank you so much for watching me. That's all from me. Stay tuned and good luck.